एआईएडीएमके पक्षरु मध्य सुप्रीम कोर्ट को राय को स्वागत करा जायछि। Dignity according to the constitutional norms of parliamentary democracy, and they should not frustrate the attempts of the state legislatures to pass laws, and they must act as an advisor only. Old law has not only been restated, but Article 200 has been analyzed, and the power of the governor to grant assent or to withhold and send it back to the House with message or to reserve for President's consideration, they've all been analyzed, and it has been provided that the governor must act with speed and should not just withhold the legislations. Yeah, that is what the Constitution says. The governor has to act according to the advice of the cabinet ministers. That is what his duty is. When a bill is passed by the state legislature, he has to give assent immediately. If he finds that there is any issue which may otherwise go against the Constitution or other provisions, he can send the bill to the President. That is what he can do. He cannot withhold his assent, and if he wants to hold the bill for some time, he has to tell why he is से बिल रे किसी सजेशंस कि संशोधन चाहते गवर्नर ताले से सजेशन या संशोधन प्रस्ताव देकरी बिल टाकू राज्य सरकार पाखु फेरी दे पारिबे। पुणी जदि सरकार लेजिस्लेटिव असेंबली रे ताकू पुनः से संशोधन को ग्रहण करंतु कि संशोधन को विचार करके जहाँ रखा कथा करी पठाती ताहले सेटा द्वितीय बार आसबार 3 मास पर भितर गवर्नर को आसेंट देवार अच्छी जदि न दि ताहले एटा आईन सम्मत नुह एटा कि संविधान आलोचना माननीय सुप्रीम कोर्ट धारा 142 को इनवोक करते जोटा कि पावर सुप्रीम पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ताकू करी से कहले जेहेतु एगुड़ी यही टाइम लाइन भितर थे भी स्वीकृति देना एटा धरा जीव डीम टू बी अप्रूव्ड। क्लियर पॉइंट इज आर्टिकल 200 कह जाइए आइदर गवर्नर ग्रहण करेंगे किंबा आपको प्रेसिडेंट पाक पठेबे आ जदि आउपर से रिजर्वेशन रखिले ताले स्वतंत्र टाइम फ्रेम रहिबो आ माने नुहे 2000 मसीहार लॉ को 2025 मसीहा पर्यंत से बसिकी रखिपारे। सो से मर्म ही माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्देश देइछन्ते ग्रहण करिया।